So you come from your interview is in Ludhiana, like Jalandhar. Okay. What do you know about Christ? Well, a different style. 80% chances introduce yourself, tell us something about ourselves, yourself. 80% chance है, but it can start like this also, randomly. एक बंदे का IIM का इंटरव्यू था, नहीं IIT का, हाँ IIM का था या IIT का. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू अफ्रेड? बंदा अफ्रेड हुआ है, पीछे को टेकन अबैक. He was prepared. Introduce yourself. Tell us something about yourself. चलो. So, what do you know about Christ? I have observed Christ's website a lot before giving the entrance form, before applying for Christ. One of the major things that align my way of thinking, learning with Christ is that it focuses on academics along with exposure and co-curricular activities. It is one of the major reasons that I have applied for Christ. Very good. सिर्फ academic ही. चलो. Other than that, the curriculum, which I think will help me to. मैं बोला ना फैकल्टी जरूर बोल देना. Okay. फैकल्टी ही आपकी इंटरव्यू ले रही है. समझो एक नंबर बढ़ जाता है. They are the people who are interviewing. So if you, and it is genuinely, I am telling you, in any college, the faculty plays almost 80% role. It should be the closing point, or it should be the starting. You can make it a starting point. As I have said, 80% impact है. If the faculty is good, he or she will encourage you, go to library, study Harvard Business Review. We will discuss Harvard Business Review this point tomorrow. This page we will discuss. We'll discuss this case. So even if the infrastructure is moderate, even if the college is moderate, if the faculty is serious, he or she can lift the students up. Who is your role model? I'll ask different questions. 80% वही ऐसा चल सकता है फ्लो जैसा वो है, but I'll now. सर मेरा ये डाउट था क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा था who inspires you the most, who is your role model. So it should be a personality or someone in your life. Better to be someone with whom panel can relate. Yeah. Normally बच्चे बोल देते हैं चलाकी में कि my uncle, dad, my father. So then 90% they will ask you first, okay, why? Yeah. At your stage, they will ask you why. At MBA stage, they will say, tell us somebody with whom we can relate. Okay. Don't try to be, but वो बोलेंगे नहीं, don't try to be over smart, but it gets conveyed. So you would be having someone, Mrs. Bector can be one. Okay. Creamica wale. Yeah. So then there can be personality like Mama Earth founder. Yeah. Those kind of, inspirational story. Then ये है Forest Essential. CEO or the chairman of this company. No, she started with 2 lakh funding from the very, 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 very humble background, started making soaps. Wow. And today I think Forest Essential is worth 6,000 crore plus group. Actually, my father is from a pharma background, so I have studied Namita's startup so a that's lot. Good. Very good. So I can say about that. So if you have studied that, in your introduction also let us do the introduction. Introduce yourself. Good evening, sir. I'm Angel Gupta. Good evening, sir. I'm Angel Gupta. I'm from Ludhiana, Punjab. 50% आपको जाता है काम. I'm currently studying in class 12th and I'm doing my education from Kundan Vidya Mandir Senior Secondary School. All my academic life, I've been a diligent. Kundan Vidya Mandir does not matter to them. So school नहीं बोलना. Doesn't matter to them. Okay. They don't know sitting in Christ who is Kundan Vidya. फॉर्म भरा हुआ है, कोई लोड नहीं है. रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नो, आपकी वो आनी चाहिए थी जो आप स्टडी कर रहे हो. That's why I give you introduce yourself so that comes as a I like to study these things. I'm inspired by the business world. I like to study these. उस पे डिस्कशन शुरू हो जाती है. ठीक है. और मैंने बीकॉम ऑनर्स क्यों लिया, वो इंटर में होना चाहिए या नहीं? आपका बीकॉम ऑनर्स है, पूछेंगे तो अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे. So introduce yourself. All my academic life, I have been a diligent and a hard work student. One of the most fruitful achievements. Your father is into job? No, he is running a business. Pharmaceutical business. Okay, fine. Carry on. And one of my most fruitful achievements, which I feel, is that I represent as a house captain in my school, and with that,
with that responsibility, I have inculcated a lot of leadership and communication skills. Along with that, I am part of school's dramatic society, and I am also a part of the social service, which is known as Kundanites Ki Namada. We go to बहुत लंबा हो schools गया and okay. आपका मेन पॉइंट जो आपने बोलना था वो मिस हो गया ये पॉइंट मेन था कैप्टन वाला but it has become almost 60 seconds so they will be after 45 seconds their expressions will start changing Captain के बाद after 50 seconds they will interrupt you okay. which is bad for us Okay. so I am Angel. I hail from city of Ludhiana. Yeah. My father is into business. Yeah. Start from there. Okay. And having grown up, seeing him manage his business and grow his business, I have learned a lot of things in management. Yeah. With my interest in management, I have been reading and studying. जो आप बोल रहे थे. Okay. And then you come till now. I have been the group captain, the school captain, where I handled a lot of people. Yeah. So that also regenerated and reinforced my interest in management, and that's how I'm here. ठीक है. बीकॉम ऑनर्स में क्या आगे लेने का क्या फाइनेंस या क्या सर पहले तो मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि मैं बीकॉम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में करूं पर मेरे को नहीं पता था तो मैंने जनरलाइज करके बीकॉम ऑनर्स भर दिया. सो नाउ आई वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. इतना जैसे आप बोल रहे हो ना जो सारी प्रोफाइल उसके बाद वो कहेगी बीबीए क्यों नहीं अप्लाई किया. कोई बात नहीं आपको मैं आई हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस. अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि क्यों नहीं लिया बीबीए क्यों लिया बीकॉम तो आप कहना आई हैव मोर इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स. I want to learn all gambits of management but specialize in finance. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का अच्छा था थोड़ा सा और देख लेना. एक अपनी फ्यूचर यू वीडियोस है आईएमएस की वो देख लेनी है एक दो बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है. उसमें काफी कुछ आता है. मर्जर एंड एक्विजिशन इज वन. देन फंड अरेंजिंग फॉर एक्विजिशन फंड अरेंजिंग फॉर सेलिंग फॉर मींस न्यू स्टार्टअप्स एक्सपेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग काफी कुछ है उसका गेम. सर एक मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी सोचा था दैट आई वेंट फॉर अ वर्धमान में इंटर्नशिप तो उससे भी जब मैंने अलग अलग लोगों से बात करी हेड ऑफ डिपार्टमेंट. आपके वैसे तगड़े पॉइंट्स हैं. अब जस्ट छोटा सा मेंशन कर देना आई हैव डन इंटर्नशिप इन वर्धमान इन द फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. नहीं सारे डिपार्टमेंट्स की थी मतलब सारे डिपार्टमेंट से बात हुई थी. इट वाज ऑफ 7 days. Overall general management internship where I was exposed to all the areas. फिर अगर उसने पूछा why BCom honors तो आप ये यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो. ठीक है. During that I found finance and accounts to be most interesting. Yeah. ठीक है. ये रीजन होगा ये भी एक रीजन होगा. फाइनेंस में इंटरेस्ट है. हाँ. Okay. पूछो जी कोई क्वेश्चन. हाँ निकालिए क्या रही है. गुड. आपके फाइनेंस अकाउंट्स के पूछो एंट्रीज वगैरह की. Journal entry for forfeiture of equity shares and reissue at 80 rupees. Very good, excellent, very good, covered. Good. आपने भी पूछना है इसको ऐसे. Okay. So coming to forfeiture of shares, first we have to debit share capital account if the security premium is not accounted. That is, if it is not given, then we have to mention the security premium and debit that account. Then we have to credit forfeited shares account in which the amount which is given to us is mentioned, and then the amount which is not given to us is mentioned in credit of call in arrears account. And for reissue, the amount with which we have reissued the share, like you have said 80 per share, we have to mention it in bank account debit. Then the share at which it is done, the face value, it has have to be shown in credit of the share capital. And then to balance it, we have to capital what is reserve. trial balance? Trial balance. And how it gets corrected? नहीं याद आ रहा. Very good, excellent, शाबाश. इतना कोई औखा थोड़ा है. How is Indian economy doing? I have recently read about Indian economy and there is a diligent growth of $4.3 trillion. Okay, and carry on.
and it is developing at a great pace. But the only thing it is lacking behind is that there has been a drastic income inequality where a sector is growing at a greater pace, but one is quite stagnant. Okay, your take. When domestic currency appreciates, what are its side effects? नहीं, क्वेश्चन नहीं, आप बताओ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे. Currently, 1 Indian rupees is equal to $90. Excellent. Give him a round of applause. Give him a round of applause. Good. This is the other side of the thing. जो चिदम्बरम सुनाता रहा, मनमोहन सिंह सुनाता रहा, मोदी जी सुना रहे हैं, नीता सीतारामन सुना रही है, बड़ा गुड, बड़ा गुड, बड़ा गुड. वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. अरे भैया 19% वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके पास है. यू आर द मोस्ट पॉपुलस. फिर आप बनना नहीं, इतना लैंड है आपके पास, तो आप फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट बनोगे नहीं. पर कैपिटा इज गुड पॉइंट यू ब्रॉट इन. उसको इक्वालिटी ना करना, ये सब है, ये है मैक्रो लेवल. माइक्रो में जाके उसको पर कैपिटा इनकम में बोलो. पर कैपिटा इनकम वी आर आई थिंक 139th इन द वर्ल्ड. स्पेसिफिक नंबर, जिसने नंबर टेबल पे छोड़ दिया 100% सिलेक्शन. जनरल ग्लोबल ज्ञान 99.5% पीपल विल टॉक जनरल ज्ञान. ग्लोबल ज्ञान, जनरल ज्ञान, इंडिया इकोनॉमी इज डूइंग गुड, जनरल इनइक्वालिटी. अब आपने फिगर पे लाओ ना, इन पर कैपिटा इनकम वी आर 139th इन द वर्ल्ड. इज आई थिंक 30 or 40,000 per month is the average income of an Indian. 4.3 trillion economy नहीं mention करो. There are two sides. Okay. There are some positives in the economy. There are some negatives. And जब पूछता है आपसे how is Indian economy doing? So like there are some positives of our economy's current situation. There are some negatives. Negative सबसे बड़ा ये है 90 रुपए आपका करेंसी कहाँ जा रही है. That's a barometer. Currency, inflation. चलो inflation under control है, fiscal deficit under control है, but they are not the only parameters. Other side, biggest important is per capita. 139th है वर्ल्ड में. फोर्थ लार्जेस्ट. अभी घर बाहर निकलते हैं, अभी पता चल जाता है क्या देश की हालत है. We discussed Vande Mataram for 2 days and that we don't have government hospitals. The PGI में आप जाओ, almost 1 किलोमीटर लंबी लाइन है. इमरजेंसी सिरिंज लेके पेशेंट के साथ बंदा खुद खड़ा है, खुद पंपिंग कर रहा है उसको वेंटिलेटर की तरह. दिस इज द हेल्थ केयर व्हिच एवरेज इंडियन इज गेटिंग. So our Indian passport is also very low value compared to other. ये फिर ग्लोबल ज्ञान वाली बात है ना. जो जो सब्जेक्टिव चीजें हैं, ट्राई नॉट टू मेंशन. सब्जेक्टिव में फंस जाओगे. इट कैन और इट मे नॉट. It can match or it may not match with the person panel is sitting there. His views can be different. So objective है 139th in the world. बोलो अब आपका क्वेश्चन पूछो. When the appreciation of domestic currency takes place, what are its side effects? Very good. An appreciation of domestic currency. It takes place, it becomes expensive for the foreign investors or foreign people to get material from India. It becomes costlier at comparison to earlier, and according to that, the foreign exchange also decreases. Along with that, the image, इसमें भी आप कोई ऐसी चीज आए, खैर आपके लिए थोड़ा ऊपर का बॉल है, मतलब बाउंसर टाइप है, तो यू कैन स्टिल ब्रेक द थिंग्स. जैसे हमने इकोनॉमी में बात की पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें अप्रोच होती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो एक्सपोर्टर है उनकी वाट लग जाएगी, क्योंकि दे वुड हैव कैलकुलेटेड देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट, देयर एवरीथिंग व्हेन दे when they sent their offer in dollars per item. They calculated into conversion of say $100 if they gave for one item, $100 per unit. They would have calculated at that time they were going to get 9,000 rupees per item. From there they make backward calculation, logistics, say 100 rupees out, 1,000 rupees logistics out, then my material cost is this much, this. Now that 9,000, if it becomes 4,500, he goes in minus.
So in the short term, it can hurt the exporters because they earn in foreign currency, and all their calculations while they decide the contribution and while they decide whether we should take this order or not take this order, they make it on the basis of the forex of the day on which they are quoting. So how do you safeguard yourself? सुना है कभी इसके बारे में? हेजिंग का नाम सुना है? हाँ, hedging. सुना हुआ है? किसमें था ये? अकाउंट्स हाँ, में, फाइनेंस, economics में. इकोनॉमिक्स में. So you can hedge your forex risk. ठीक है. You may end up paying, say, 0.5% or something, but your big risk will get covered. You will hedge it at dollar at, say, if today it is 90 point कुछ है या 91 है, 90 points. so say 90 है, तो आप उसको 88, 86, 85 इस पे hedge कर सकते हो. जितना लोअर साइड पे जाएगा उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जितना उसके नियर रखोगे उतना प्रीमियम कम रहेगा, क्योंकि रिस्क फ्लक्चुएशन में आ जाता है. और लॉन्ग टर्म के लिए लेस रिस्कियर है because Who is the finance minister of India? निर्मला सीतारमण. Home minister? हे भगवान, हे राम. टॉप 10 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट के 3 चीफ मिनिस्टर पता ही होगा. पंजाब दा, हे भगवान, हे राम. You don't deserve a passport. You don't deserve to go into interview for crisis. मैं भूल जाती हूँ, मैं रात को सब रिवाइज करके. इतनी फोटो बेचारे लगाई है अपनी हर जगह सरदार जी ने, भगवंत मान. इतनी फोटो तो किसी ने नहीं लगाई थी, केजरीवाल और अपनी फोटो. कोई बात नहीं. तो ये स्टेट का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी तो है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा, स्टेट का होम मिनिस्टर इसी ने रखी हुई है अपने पास, होम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने. तो देन और कौन सी मेजर इंडस्ट्री मिनिस्टर? इंडिया के 5-10 टॉप मिनिस्टर पता होने चाहिए. प्राइम मिनिस्टर तो पता ही है, होम मिनिस्टर इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, देन अभी एविएशन इज एट द फ्रंट. तो वो साउथ इंडियन बंदा है, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा. ही इज द एविएशन मिनिस्टर, बार बार न्यूज में. व्हाट हाउ यू वुड, अभी नहीं IIM की इंटरव्यू पूछ सकता है, हाउ यू वुड हैव हैंडल्ड दिस इंडिगो क्राइसिस इफ यू वर द एविएशन मिनिस्टर. कहीं तो गवर्नमेंट भी लैग की है ना. बोलो. Indigo is one of the largest airlines. 65%, 66% market. Largest is again global ज्ञान. Only profitable airline. चलो एयरलाइन प्रॉफिटेबल कभी अभी हुई, कभी नहीं भी रहेगी या नहीं भी थी काफी सालों तक. मेन मार्केट शेयर की वैल्यू नंबर 66%. इफ यू टॉक दिस, रिमेंबर, एक बंदी पढ़ती है, इसको पता है, शी मेक्स बिजनेस सेंस. तो न्यूज पढ़नी जरूरी है. अभी तो चलो ये चुल्ली सी इंटरव्यू है, बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी लेफ्ट हैंड जॉब है, बट आगे जो होनी है, आई एम कोझिकोडे, आई एम बैंगलोर, आई एम रांची, दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन. थोड़ा बहुत न्यूज पढ़े. सो एविएशन मिनिस्टर भी अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कायोस हो गया. रेलवे मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार नेगोशिएशन चल रही है यूएसए के साथ. पीयूष गोयल है, commerce and industry minister. Then there are other ministries like health. क्रिटिकल है बट कोई परवाह नहीं है. जिस दिन हेल्थ में क्राइसिस आएगा तब मोदी जी को पता चलेगा, तब उनका मिनिस्टर दिखेगा हमें कौन है. आज कुछ नहीं लेना देना. आज वंदे भारत पे 2 दिन डिस्कशन है भैया. राष्ट्रीय गान चल रहा है, चलने दो ना. क्या किसी ने, नेहरू जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हमें क्या लेना भाई. आप देखो सिचुएशन क्या है देश की. हर जगह स्नैचिंग, लॉ एंड ऑर्डर पुअर. आप ये कह दो जी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेंटर को भी तो कुछ करना है. ओवरऑल हो जाए क्या एविएशन पे कर सकती है ये जो इंडिगो की सबसे पहली बात, गवर्नमेंट जहाँ लैग की है, गवर्नमेंट ने जुलाई में गाइडलाइंस दी थी कि एयरप्लेन, ये फाइट जो पायलट्स हैं उनके इतने आवर्स से ज्यादा फ्लाइंग नहीं करेंगे और डे में, इतने नाइट में, इतने उनको रेस्ट डे चाहिए. इसी तरह ग्राउंड स्टाफ का, क्रू का, सबके लिए नई गाइडलाइंस आई जुलाई में. दे डिड नॉट इम्प्लीमेंट टिल लॉन्ग टाइम, नवंबर. तो गवर्नमेंट डिड नॉट मॉनिटर इट एट ऑल. फर्स्ट बिग ब्लंडर. सेकेंडली 66% मार्केट शेयर है, तो थोड़ी मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन IRDA की, यही एस्पेक्ट पे नहीं और एस्पेक्ट पे भी
उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो आपको ये चीजें भी निकल के आ जाती मीटिंग. Government was not at all proactive, not at all discussing, not at all reviewing, not at all monitoring anything related to aviation. मिनिस्टर साहब सिर्फ जाते हैं मिनिस्ट्री में 2 घंटे बैठे, सारा दिन फंक्शन, रिबन काटा, ये काटा, वो काटा. दिस इज हाउ मिनिस्ट्रीज आर फंक्शन. There are around 1,000, 1,400 employees not accountable. This is a problem with our country. There is no government official accountability bill in this country. एवरीवन जो कोई कॉन्शियस से काम करते तो करते, नहीं तो उसको पूछने वाला कोई नहीं. देयर इज नो मैट्रिक्स, देयर इज नो परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग आवर कमिश्नर पुलिस, इंक्लूडिंग एचएचओ, होल लाइन. तभी एवरीवन इज टेकिंग द लॉ फॉर राइट, तभी दे आर टेकिंग देयर जॉब फॉर राइट, तभी दे आर टेकिंग अस फॉर राइट. एंड वी डोंट नो हु इज आवर होम मिनिस्टर. दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग वी एज वोटर्स फॉर राइट. And we are how many, my dear? Just 8%, 10% literate voters. 20, 30, 40. Out of literate voters, only 20% will go and vote. So what impact we have? We are not important when they, Amit Shah, Modi, when they decide strategy, people like us are immaterial, irrelevant. We don't matter. We have broken votes. Some of us will vote for Congress. तो देश है ये, इनको छोड़ो. कितना है? 2.5% के लिए छोड़ो. They will make noise. They will write mails. They will write on Facebook, Twitter, blah blah blah. But they don't have power. Power is with poor. 80%. उनको free ration दो. Even after COVID दो. For 2.5 2 years, 80,000 crore your and our paid money was given. कोविड में दिया फाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन दिया, भयंकर अच्छा दिया, कोई बात नहीं. अभी वाई इट विल बी कंटिन्यूड आफ्टर कोविड फॉर 1.5 years. Moment Nirmala Sitharaman said it in the budget. I told my wife कि 5 to 10% votes का master stroke है. You tell Kejriwal he's selling revdi or gachak. He's selling revdi and mufli. You are selling gachak. You are giving gachak free. 80 crore people were the beneficiaries. 80 करोड़ के ऊपर घर में जब जाएगा इतना कुछ तेल, खाना पीने का राशन, ऊपर मोदी जी की फोटो, योगी जी की फोटो. It is our money. Next level you should be able to understand. ठीक है. अभी macro level are the top ministries, current affairs. I am teasing you on all areas which they normally ask. ठीक है. So hopefully it should have. What are your strengths and weaknesses? मैंने फॉर्मेट इसीलिए वो भेजा सीवी का. यू कम टू नो योरसेल्फ बेटर व्हेन यू मेक दैट. According to me, I explore a lot of areas. I am quite intellectual, and other than that, I think I have a high emotional quotient, which makes me a better person when it comes to decision making and all that stuff in वेरी गुड. business. ठीक है. बस हो गया. बस वीकनेस भी पूछी थी बंदे ने. Weakness. Sometimes I get overexcited and over involved in some things which are not necessary. That I am becomes trying to, whenever you are asked about any weakness, you should put it up in such way. Sir, I am trying to improve upon yeah. this aspect. It's just a way of answering. Same thing. I am weak at no. Sir, I am trying to improve upon this aspect. And then 99% they will ask you how you have Improve. tried. No, how you have tried. तो कुछ मेडिटेशन बोल देना, यहाँ भी कराते थे क्लास में. मेडिटेशन, some deep breathing I take. So when I get a hint that I'm going overdrive, I take a break. बैठो. I mean